ये आज के युवा की पुकार है कि मैदान के बिना मेरा बचपन भी अधूरा है। संसार का सबसे ऊंचा खेल का मैदान जो चायल में स्थित है, वह भी बच्चों की पहुंच के योग्य नहीं। और यही कारण है कि जब हमने खेलने के लिए कदम बढ़ाए तो पड़ोसी ने आवाज लगाई कि आगे मत बढ़ना, यह जगह मेरी है, कि आगे मत बढ़ना, यह जगह मेरी है। तो हमारे वो बढ़ते कदम पीछे लौट आए। Doesn't believe in mincing her words for a social cause. As all stalwarts get together to lead the initiative of SOS-Shivaji in association with Himachal Water, here is hoping that this movement will help the children of Shimla enjoy their childhood in playgrounds and not in front of the idiot box or wrapped up with just books for company. That their childhood will now take a flight and land in the lap of a play area just around the corner. Thank you. Heard about the children playing in the cemetery? Dear audience, may I ask you who is responsible for this? Are we responsible or the administration who has deprived us of decent playgrounds? And the playgrounds which are there do not have any provision to let the children play. They are not allowed to play on the ridge, the Anadale ground and Chora Maidan, as the playing causes inconvenience to the tourists, the army, and as you all know that most of the space is occupied by the cabs in Shimla. As a matter of fact, children are not only deprived of open space to play, but also from an essential aspect behind development of a healthy, complete personality in the social content. Secondly, Shimla hardly produces sportsmen because of the same reason. In 2011, after a letter from a child regarding lack of playgrounds to play, the HP High Court had asked the Shimla MC that why there were no playgrounds. The MC mentioned lack of fund as reason in reply. But here I would like to ask the administration, from where are they getting funds for constructing building, commercial complexes, parking lots, etc.? Sorry to say, the administration is only showing their back on this issue. A spark of light illuminates the darkness. Mr. Tikendra Pawar, Deputy Mayor Shimla, has announced the conversion of dumping areas into parks. A huge round of applause for his efforts. My dear friends, now the time has come for us to take a stand and give our generation an open space to play and breathe. With this, I rest my case for your judgment. Thank you. Walking through the playground in the bright daylight, what can I see? A big bright sun shining and smiling down on me. It seems like it keeps on telling me, keep on aiming high. Another such as I, don't be a passerby. Another such as I, don't be a passerby. Good morning to the excellences, respected judges, dear teachers, and all my dear friends. The issue that hardly caught anyone's attention living in Shimla is the lack of playground or even open spaces for the children to play. Let us talk and think for a while that why children are not participating in the outdoor games, despite of knowing the health benefits of doing so. My main objective over here is to bring stress towards the word administration. Why to go beyond and blame the central government or the state government for this? What school institutions are providing us? The question is this. Let us talk about our own town Shimla, where hardly any of the school is there with open spaces for the children to play. In Shimla town, there is no park or playground, which is a matter of concern. Schools are not fulfilling any of the criteria of the Central Board of School Education and the State Board of School Education, leaving children behind an aspect just to think negative, and the development of the positive things are not there. Playgrounds and parks. Playgrounds and parks are not just to deliver the eminent personalities in the field of sports. These are the sources of recreation which gives us a sense of relief and relaxation in the life marked by hurdles, miseries and hardships. My point over here is that what administration is doing.
Aren't we able to produce more Ajay Thakur, more Paras Togra, or more Suresh Chow? These are the participants which are making us feel proud. Now, I want to just end my words as time is running out and say that this will need a joint effort of the central government, the state government, the administrations, the municipal corporations, and mainly the school administrations where children spend most of their time. And also, we need to participate in the outdoor games just because we are not deprived of the open spaces, but also behind an aspect of the development of our complete personality. Jai Hind! तथा मेरे प्रिय साथियों, मैं अपूर्वा छात्रा 11वीं कक्षा की छात्रा आप लोगों के समक्ष प्रशासन का उदासीन रवैया, बच्चे पार्क तथा खेल कूद के मैदानों से वंचित इस विषय को लेके अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जमाना तीव्र गति से बदल रहा है। जमाना तीव्र गति से बदल रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, आज का युग, वर्तमान युग विज्ञान का युग है और इस वर्तमान विज्ञान ने मानव को अनेक आश्चर्यजनक तथा अद्भुत अद्भुत वस्तुएं प्रदान की है। खेल मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खेल एक क्रिया होती है जिससे हमारे शरीर, हमारी बुद्धि और हमारी मानसिकता का विकास होता है। और छोटे बच्चों को खेलने के लिए पार्कों की तथा बड़े बच्चों को खेलने के लिए मैदानों की आवश्यकता पड़ती है। खेल खेल में सारे बच्चे सेहत खूब बनाते। खेल खेल में सारे बच्चे सेहत खूब बनाते। उछल कूद कर मस्ती करते जीवन का सुख पाते। परंतु हमारे प्रशासन का इसके तरफ सकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं है। हमारा शिमला प्रशासन हर एक छोटी से छोटी चीज की ओर ध्यान देता है, परंतु इस ओर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बच्चे पार्कों तथा खेल कूद के मैदानों से वंचित हैं। आजकल के बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा समय फोन चलाने, टीवी देखने आदि में बर्बाद कर देते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि बच्चे पार्कों तथा प्लेग्राउंड से यानी कि खेल के मैदानों से वंचित है और फोन, टीवी आदि चलाने का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कि हम आजकल न्यूज में देखते ही है कि फोन की बैटरी फटने से एक बच्चे की मौत, ईयरफोन लगाने से युवक की मौत, या फिर फोन आदि इस्तेमाल करने से बच्चों का मानसिक संतुलन खराब होना। ये प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को ना तो खेलने के लिए जगह मिल रही है और ना ही अच्छे से वो व्यायाम आदि कर पा रहे हैं। इसलिए प्रशासन को यह देखना चाहिए कि हमारे अपने शिमला शहर में ज्यादा से ज्यादा पार्क हो और जो पार्क बने भी है उन्हें भी अच्छे से इस्तेमाल में लाना चाहिए और पार्क में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और फूल आदि उगाने चाहिए और बैठने के लिए बेंच लगाने चाहिए, खेलने के लिए झूले आदि बनवाने चाहिए और बच्चों को उनके बचपन का आनंद ले सके। अंत में मैं आपसे बस कुछ शब्द कहकर विदा लेना चाहूंगी कि बच्चे देश का भविष्य है। बच्चे देश का भविष्य है। उनका स्वास्थ्य सही होना बहुत आवश्यक है। अगर बच्चों का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो देश कैसे उन्नत होगा। इसलिए बच्चों को भी अपना ध्यान पढ़ाई पर और खेल कूद पर अच्छे से लगाना चाहिए। अतः प्रशासन को भी अपने में कुछ बदलाव लाने चाहिए और पार्कों तथा खेल कूद के मैदानों का निर्माण करवाना चाहिए ताकि बच्चे खेल कूद के मैदानों से वंचित न रहे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। As rightly said, man without park is lame, man without park is lame, and park without man is sane. Honorable Chief Guest and respected judges, I am Ria Saran, a student of Portmore School, wants to express my views on a topic, parks, playgrounds in Shimla for children in different attitude of administration. A park is basically a well-pruned and preserved area of land meant for the people to come and relax, enjoy and spend some time away from the routine of their house and work. A children park, as the name indicates, is a park meant for children to come,
in the mornings and evenings and spend their leisure time away from their congested homes and busy environment. Dear audience, Shimla has abundant natural beauty to take away daily stress and fatigue. Nestled among huge Himalayan mountains and deep valleys in between, the city has endless natural beauty for its residents and visitors. Shimla has Botanical Garden, Hippipure Park, Indra Tourist Park and so on that are visited by numerous of the people during their vacations and weekends. Mostly the children love to visit such parks. But the question is, are these parks enough and well constructed? No, these are not. As an example, we have Jhansi Park. It is a great park for children to play. But from 1 or 2 years, the construction of this park is on process. Now the question is, why there was the need to construct this park again? Was the park not constructed with good materials earlier? Dear audience, in our city Shimla, we have no playgrounds where our sportsperson can do practice for their sports and games. Our administration should provide us good parks and playgrounds so that we the residents can also enjoy every aspect of its beauty. At last, I would only like to say, for endless rides and fun, and dreams in the sun, come without holiday. Visit your nearby parks today. Thank you and have a nice day. मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायकगण और उपस्थित सभी सज्जनों का अभिनंदन करते हुए मैं शिमला नगर में सीमित पार्कों व मैदानों की समस्या के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शिमला भारत का एक अति मनभावन पर्यटन स्थल है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ की सुंदरता का अविस्मरणीय अनुभव करने आते हैं। यहाँ का प्रशासन भी बहुत उम्दा ढंग से अपना कार्य करता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का प्रशासन शायद समाज के एक बहुत विशेष वर्ग को भूल चुका है, और वो है हम बच्चे। बचपन खेल कूद की उम्र मानी जाती है, परंतु हमारे शिमला नगर में बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क व मैदान बहुत सीमित है। शिमला में पार्किंग की समस्या के कारण आसपास में जो भी खाली जगहें खेलने के लिए उपयुक्त या फिर योग्य होती हैं, मुख्यतः वहाँ तो गाड़ियाँ ही खड़ी पाई जाती हैं। तो आखिर हम बच्चे खेले कहाँ? शिमला में यूं तो हजारों इमारतें हैं, परंतु लगता है कि यहाँ के लोग और प्रशासन ये भूल गए हैं कि बच्चों के लिए पार्क व मैदान भी बहुत अनिवार्य है। बच्चों को राष्ट्र का आधार माना जाता है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और बच्चों के लिए तो स्वस्थ रहने का सबसे मनोरंजक साधन ही खेल है। परंतु शिमला में सीमित मैदान व खेल के मैदान व पार्क होने के कारण बच्चों का रुझान खेलों से पूरी तरह हट चुका है। वो बाहर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलने की बजाय घर पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलना अधिक पसंद करते हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। बाहर जाकर मैदानों में खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, साथ ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलने से बच्चों में एकता की सद्भावना भी जन्म लेती है, और जो आगे चलकर हमारे समाज को दिशा देने में बहुत ही मददगार योगदान भी साबित हो सकता है। बाहर जाकर मैदानों में खेलने से बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनका मानसिक विस्तार होता है और उनका सामाजिक मेलजोल भी बढ़ता है। क्या आपको पता है, खेल खेलने से न केवल बच्चों में शारीरिक शक्ति उत्पन्न होती है, परंतु उनमें कई सद्भावों और सद्गुणों का भी संचार होता है, जैसे स्वाभिमान, दया, क्षमा और सहनशीलता। अनुशासन और आज्ञा पालन तो खेलों के प्रमुख गुण हैं, और यदि देश के भविष्य यानी हम बच्चों में यह गुण विद्यमान होंगे तो भारत को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अंत में मेरा यह मानना है कि बच्चों के लिए पार्क व मैदानों में जाकर खेलना
एक दूसरे से मिलना जुलना उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए शिमला में सीमित पार्कों व मैदानों की समस्या का निवारण बहुत जरूरी है। तो अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि शिमला के निवासी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। जो भी खाली स्थान पार्कों व मैदानों के लिए उपयुक्त हो, बच्चों के खेलने के लिए योग्य हो, वहाँ उन सालों की जानकारी प्रशासन को दी जाए और जो प्रशासन ने बनाए हैं पार्क व खेल के मैदान बनाए हैं उनको उनकी देख रेख में पूरा सहयोग करें। इसलिए मेरा अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, वो हमारे देश के आधार होते हैं। इसलिए उनका खेलना कूदना बहुत जरूरी है, जिसके लिए शिमला में सीमित पार्कों व मैदानों की समस्या का निवारण बहुत जरूरी है। और इस समस्या के निवारण के लिए ये हम नागरिक ही हैं शिमला के, जो प्रशासन की पूर्ण रूप से सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। In the words of Dr. Peter Gray, I quote, "Play deprivation is bad for children. Among other things, it promotes anxiety, depression, suicide, and loss of creativity," I unquote. A very good morning to one and all. Today, I stand here on behalf of Auckland House School to present my views on the topic, how important parks and playgrounds are in our lives, and indifferent attitude of the administration towards this. Parks play an important role in the social, economic, and physical well-being of a child right from the stage of early childhood. Parks allow children to be creative and even provides a platform to build parent-child relationship. Researchers have shown that children who play in parks or in playgrounds show more advanced motor fitness than the students who stay at home and are just stuck on internet or on television. Playing is not just fun for children, but it is a very, very serious learning for them. And they learn a lot of things. Playing benefits our cardiovascular system, circulatory system, respiratory system, etc. and is very beneficial for the skin as well. I would like to say that the administration is not doing anything with the construction of new parks and is not using the recreational spaces for children. Ladies and gentlemen, I would like to ask you, if playing is so beneficial, then why don't we have more parks in Shimla instead of having just one park, that is Rani Jhansi Park, which is not in a very good condition and it does not even have playing equipments like swings, slides, seesaw for children. And ladies and gentlemen, children like me who live far away cannot always spare time to go there, and thus, ladies and gentlemen, what other alternative do you think for children like me will have but to play on roads or in streets? I would like to substantiate my views in this by citing some examples concerning the road accidents. An instance of a 13-year-old boy who was riding his bicycle on the road when suddenly a car crashed the boy, and the boy was killed because of his injuries. Another instance is of a 16-year-old boy who was playing on the road a game called Dead, who, to scare the drivers, was killed after the car ran over the boy. The administration is just ignoring these accidents and is not taking them seriously, and it has indifferent attitude towards the death of children. The administration is thinking that this happened because of a child's carelessness. But ladies and gentlemen, this is not the only reason. Another is that we don't have specifically designed spaces where we can relax, we can study, we can play and enjoy. The administration is saying that there is lack of space. But ladies and gentlemen, I would like to question them by saying that should the government be bothered more about the future of the state, that is we, the children, rather than building hotels, parking lots and catering to tourists? The increased number of vehicles on roads is also hampering the construction of new parks in Shimla and also the playgrounds. The administration must take some steps towards the construction of parks and playgrounds and should properly use the recreational spaces for children. Now, I would like to conclude in the words of Stuart Brown, and I quote, "Playing is more than just fun.
Plenty of play in childhood can make for happy, smart adults, and keeping it up can make us smarter at any age. I am quote, Shimla, it's time to get smarter now. Thank you.